In this video, I am going to speak about the biggest species of cat, tiger, important facts, conservation status, taxonomy, and behavior, ecology and behavior, and impacts of climate change on the tiger's population. The tiger is the largest living cat species and the member of the genus Panthera. Most recognizable facts about the tiger: the dark vertical strips on the large on orange fur or a coat with the white underside, and apex, it is considered an it is a apex predator, and it primarily prey on the angulates such as deer and wild boar, and it is territorial and generally the solitary in habit, but considered social predator and requiring a large contiguous areas for the heavy areas of the habitat to support its requirements for prey and rearing of its offsprings. And tiger cubs. Tiger cubs stay with their mother for about 2 years and become independent. The tiger was first scientifically described in 1758, and it once ranged wildly from the Anatolia region in the west to the Amur river basin in the east, and in the south from the foothills of the Himalayas to the Bali in the Sunda island. And over the last 15 years, the tiger population has shrunk by 95%, and there are estimated to be around 3,900 tigers species left in the wild. Tigers are still roam in India. The range of the throughout world, the range of the tigers still roam free in fragmented stretching in sports from the Siberian temperate harsh forest to the subtropical and tropical forest on the Indian subcontinent, Indochina, and single Indonesian island Sumatra. Tiger is listed as endangered on the IUCN red list, and as for 2015, the global wild tiger population was estimated to number between 3,062 and 3,948 mature individuals, with most population living in small isolated pockets. And in India currently faces major regions about the declining population. The decline in population are the habitat are the important factors important factors for declining its population. The habitat destructions and habitat fragmentation and poaching. Tigers are also victims of the human wildlife conflict due to the encroachment in countries with a high human population density. Tiger is among the most recognizable and popular of the world's charismatic megafauna. And you see why tigers are so important as the top predators and umbrella species from conservation point of view. Tigers helps to keep their environment healthy. Local people also depended on the forests and other forests depend on the healthy environment for food, water, and loads of the other natural resources.
And without enough tigers, the herbivores can overgraze and damage the land and disrupting the balance of the local environment. By helping or protecting tigers, we are also um, look after your lands and natural resources. We can look after. And the other is the climate change poses the growing threat to all to us or all, including tigers, because rising sea levels are threatening the critical tiger habitats, and warming temperature affect distribution of the tree species, which can impact tiger prey species and increase dangers to tigers and tiger habitats of extreme weather conditions like flooding or forest fires. In addition, habitat changes due to the climate change can bring tigers closer to the human communities and leading to the increased conflict. And tiger considered the world's most iconic big cat, and it features in the ancient mythology and folklore of the cultures throughout its historic range, and modern films and literatures appearing on the flags. Its appearance on the flags. On the flags and coats of arms and mascots for sporting teams. And tiger is the national animal of the India and Bangladesh, Malaysia, and South Korea. Taxonomy point of view, in 1758, Carl Linnaeus described the tiger in his work Systema Naturae and gave it the scientific name Felis tigris. In 1929, the British taxonomist Reginald Peacock subordinated the species under the genus Panthera using scientific name Panthera tigris. Following Linnaeus and the descriptions, the several subsequent specimens were described and proposed as a subspecies. Morphologically, tigers from different regions very little, and gene flow between the population in those regions is considered to have been possible during the Pleistocene. Therefore, it was proposed to recognize only two tiger species, subspecies as valid, and there are two recognized subspecies of the tiger, the Panthera tigris in the mainland Asia, and the Panthera tigris sondica in the greater Sunda Islands. The two subspecies again revised according with the two subspecies. However, two subspecies still disputed by the researchers, and since currently 9 subspecies can be distinguished genetically, and comprehensive analysis on the morphology and molecular traits, morphology, ecology, and molecular traits all putative tiger subspecies using a combined approach. The combined approach authors propose recognition of the only two subspecies, namely Panthera tigris, comprising the Bengal, Malayan, Indo-Chinese, South Chinese, Siberian, and Caspian tiger populations of the continental Asia, and Panthera tigris sondica
comprising the Javan, Bali, and Sumatran tiger populations of the Sunda island. The Panthera tigris constitute the two clades in northern clade composed of the Siberian and Caspian tiger, and the southern clade composed of the mainland populations. The tigers are historically raised from the eastern Turkey and Transcaucasus to the coast of the Japan, from the South Asia across the South East Asia to the Indonesia island of the Sumatra, Java, and Bali. Tigers can live in a wide variety of natural habitat and associated with the forest habitats, grasslands, and mangrove swamps. Bengal Sundarban is especially famous for the tiger population. The swamp forests, mangrove forest, especially known, and the swamp to mangrove swamp forest to the harsh snowy forest of the Russian forest. In Northeast Asia, they tend to be larger in size with longer hair, while the tiger on the island of the Sumatra, Indonesia, tend to be smaller and found in the tropical forest. The tiger is mainly diurnal, and it does not often climb on the trees, but cases have been recorded, and it is a rare opportunity it can climb. It is a strong, but they are a strong swimmer and often bath in the ponds, lakes, rivers. Individuals can cross the river up to the 7-kilometer wide and can swim up to the 29-kilometer stretch of the river, and they thought to be nocturnal predator. Tigers thought to be nocturnal predators and generally hunt alone and overpower prey from any angle, and usually prefer to eat self-killed prey. These are the important facts about the tiger. टाइगर, जिसको हिंदी में बाघ या संस्कृत में व्याघ्र कहा जाता है, बाघ स्तनधारी पशु है, यानी मैमल्स के अंदर आता है, मैमल क्लास के। यह अपनी प्रजाति में सबसे बड़ा ताकतवर पशु है। यह तिब्बत, श्रीलंका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर एशिया के अन्य सभी भागों में पाया जाता है, और यह भारत, नेपाल, भूटान, कोरिया और इंडोनेशिया में अधिक संख्या में पाया जाता है। बाघ की गति जो है, यानी कि स्पीड जो होती है 45 to 65 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, और इसकी लंबाई एक वयस्क जो है बाघ की जो है 2.2 से 3.1 मीटर तक इसकी जो है लंबाई होती है, और मादा की 1.9 to 2.8 मीटर तक होती है। इसी तरह से वजन नर का जो है 90 to 130 सेंटीमीटर 130 किलोग्राम एक नर वयस्क होता है, 90 से 130 किलोग्राम, और मादा का जो है 65 से 170 किलोग्राम तक एक मादा वयस्क का होता है। इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है, और संरक्षण यानी कंजर्वेशन स्टेटस के पॉइंट ऑफ व्यू से यह लुप्त प्राय है, यानी इंडेंजर्ड। इट इज लिस्टेड इंडेंजर्ड इन द आईयूसीएन रेड लिस्ट और थ्रेटन एनिमल्स में यह है इंडेंजर्ड स्पीसीज। और इसकी प्रजाति जो है टाइग्रिस है, और कुल इसका फेलिडी है। द्विनाम पद्धति जिसको के कहते हैं, बाइनोमियल सिस्टम। फर्स्ट नेम रिफर्स टू द जेनरा पैंथेरा। पैंथेरा के अंदर लेपर्ड्स आते हैं और जगुआर आते हैं, तो इसी के कुल में ये है, लेकिन ये सबसे बड़ा बिगेस्ट कैट है, और ये पैंथेरा इसका जीनस है और टाइग्रिस इसकी स्पीसीज है।
और बाघ का जो है नई न्यून वर्गीकरण में पैंथेरा टाइग्रिस के अंतर्गत जो कंप्राइजिंग जो स्पीसीज हैं, जैसे साइबेरियन बाघ और बंगाल बाघ मुख्य तरह से, और इसी तरह से जो है पैंथेरा टाइग्रिस जो दूसरी सब स्पीसीज है सौंदे का, उसके अंदर जो है सुमात्रा टाइगर पॉपुलेशंस मुख्य तरह से आती है, जो कि बाली और सुमात्रा वहाँ पे मिलती है। और कर्नाटक राज्य में बाघ जो है सबसे ज़्यादा 524 के करीब बाघों की संख्या है। इसी तरह से उत्तराखंड में 442 बाघ अब 11 अप्रैल 2023 को की रिपोर्ट है। और 2022 में जो है बाघ की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में बाघों की संख्या 3167 हुई, और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भी नवीन बाघ जनगणना के अनुसार यही आंकड़े 2022 में 3167 दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर उनके उपलक्ष्य में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का शुभारंभ किया। प्रोजेक्ट टाइगर की जो कि मुख्यतः के बाघों की आबादी वाले राज्यों को बाघों के संरक्षण के लिए केंद्रीय सहायता देना इसके अंदर प्रदान की जाती है। और जो है प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जो है जो शुरू में जैसे रिजर्व जिम कॉर्बेट, मानस और रणथंबोर, सिमलीपाल, वादीपुर, पलामू, सुंदरबन और कान्हा उद्यान थे जो है इसके अंदर थे। और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है केंद्रीय पर्यावरण, वन, जलवायु, जिसको MOI मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के नाम से जाना जाता है, उनके द्वारा 1973 में की गई थी। और इसके 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के शुभारंभ के समय में देश में केवल 9 यानी 9 टाइगर रिजर्व थे। वर्तमान में देश में इनके प्रोजेक्ट टाइगर की जो है कुल संख्या बढ़कर 24 हो गई है। धन्यवाद जी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।